अब हम HDFC की बात करते हैं। 1977 में शुरू हुई HDFC देश की दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। कंपनी अब तक 9 मिलियन से ज़्यादा हाउसिंग लोन दे चुकी है। HDFC भारत के अलावा अगर हम देखें एशिया, अफ्रीका, ईस्ट यूरोप कई देशों में काम करती है। 2023 में कैसी रहेगी क्रेडिट ग्रोथ, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और रुपए में गिरावट से कारोबार पर क्या होगा असर, 2023 में क्या है कंपनी का आउटलुक। चलिए इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हम कंपनी के VC एंड CEO केकी मिस्ट्री साहब को वेलकम करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। पहले तो सर, जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं कि बैंकिंग और NBFC सेक्टर जिसने एक अच्छा क्रेडिट ग्रोथ 2022 में देखा है, क्या यही मोमेंटम कंटिन्यू होगा सर 2023 में, या थोड़ी सी स्लो डाउन देख सकते हैं? देखिए 2022 में क्लियरली एक फर्क पड़ा बिटवीन व्हाट हैपेंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट वी सॉ इन इंडिया। आई थिंक इंडिया में हम लोग ने ये कोविड का पूरा सिचुएशन वी हैंडल्ड इट एक्सट्रीमली वेल। We made sure that liquidity was available to every segment of the market that needed money, and no one was starved of liquidity. And we saw a very quick revival in demand. Demand picked up almost immediately after the first onset of COVID and the lockdowns were lifted. And both the demand जो शुरू हुआ generally in the economy has sustained unabated till the time we talk today. थोड़ा बहुत second wave में फर्क पड़ा था for a month or two, but that was only temporary. But जो inherent demand जो इंडिया के अंदर जो है, that demand is insatiable. It's a very large demand क्योंकि हमारे कंट्री में जो penetration levels है वो बहुत ही कम है। अगर आप mortgage देखें तो mortgage to GDP in India is 11%. अगर आप credit card देखें तो they say that 1 out of less than 3 people out of 100 have a credit card. तो इतना लो penetration है कि जो growth opportunities जो ये कंट्री में है वो शायद कोई भी और कंट्री में नहीं है। और 2023 में मेरे हिसाब से जो मोमेंटम जो बिल्डअप हुआ है 2022 में वो सस्टेन जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ है वो सस्टेन होगा इस साल भी, ये अनुमान हम लगा रहे हैं जिस तरह से इस वक्त ट्रेंड्स दिख रहे हैं। ऑल राइट, तो ये तो बात हुई सर किस तरीके का ओवरऑल आउटलुक है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है अगले साल के लिए या आगे क्यूज हम जो देख रहे हैं, क्या होगा इंटरेस्ट रेट्स का, कितनी और हाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ हमने काफ़ी एक स्ल्यू ऑफ रेट हाइक्स देखे थे। अब आपको लगता है कि और हाइक आएगी? अगर हाँ तो कब तक होगा ये? देखिए मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन तो अभी कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन की तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। I think the only thing RBI may need to look at, of course, they will have to keep looking at all the data that keeps coming through CPI numbers and etc. But I think the only worrying thing at the back of the mind is US में क्या करते हैं, क्योंकि अगर US continues this aggressive drive of raising interest rates, तो थोड़ा बहुत इंडिया के अंदर there will be some impact on India. क्योंकि अगर हमने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया तो करेंसी में करेंसी कैन डेप्रिशिएट। अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो फिर इन्फ्लेशन वापस बढ़ेगा because the cost of imports will go up. But the good part is oil prices are coming down globally. With oil prices coming down globally, my sense is inflation numbers will remain low, and RBI may not need to do anything very aggressive going forward. So if you ask me, if RBI was to do, let's say 10 in a year in terms of increase in rates, 9 out of the 10 is over. You might see the tail end of the rate hikes will continue. Maybe another 20-25 basis points hike ho sakti hai, depending on data, depending on what US Fed does. But mere hisab se that is then the end of the story. And again, in my opinion, if recession sets in US at some point, 6 months later, 9 months later, whenever it happens, US at that point of time will actually be forced to start cutting rates. काफ़ी डिपेंड करेगा यूएस में क्या सिचुएशन है, बट अभी हमें नहीं लग रहा है इन्फ्लेशन एक कंसर्न है और कोई रेट हाइक ज़्यादा यहाँ से और होंगी। यहाँ पर स्टेबलाइज होगा जैसा आप कह रहे हैं, ये अनुमान ऑफ कोर्स हम लगा रहे हैं। लेकिन सर ये साल हमने देखा NIMs यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में अच्छी खासी एक इंक्रीज आई है। क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू लग रहा है सर, होगा 23 में भी? मेरे हिसाब से यू आर टॉकिंग ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन? यस सर। Net interest margin, if you ask me, strategy is not the best way to look at profitability. क्योंकि अगर आप थोड़ा रिस्क लेके लेंड करते हैं तो आपकी निम बढ़ जाती है,
अगर आप रिस्क कम लेके लैंड करते हैं तो निम आपकी कम हो जाती है. बट निम हैज टू बी वेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू थिंग्स. इट हैज टू बी वेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट. अभी आप समझ लो मॉर्गेज हाउसिंग लोन है. हाउसिंग लोन के अंदर रिस्क वेट 35% है. अगर आप पर्सनल लोन, इफ यू गिव अ पर्सनल लोन, द रिस्क वेट इज 100%. बट पर्सनल लोन में आपको यू विल गेट अ हायर इंटरेस्ट रेट बिकॉज द कस्टमर विल पे अ हायर रेट. इट्स एन अनसिक्योर्ड लोन. तो खाली निम को इन आइसोलेशन लुकिंग एट निम इज नॉट द राइट वे टू लुक एट. You have to look at NIM on a composite basis, taking into account asset quality related issues and taking into account capital related issues. So ये सब देख के when you look at all of that, NIMs will remain stable for the banking system as well. ओके श्योर. सो निम्स का तो ये व्यू है सर. लेकिन जिस तरह से हमने कोविड के बाद देखा था, एक रश था प्रॉपर्टी बाइंग में और हमने एवरेज टिकट साइज भी बढ़ते हुए देखा था ऑफ हाउसेज. पीपल प्रेफर बिगर होम्स नाउ. तो उसकी वजह से हमने एक गुड इंक्रीज इन लोन ग्रोथ था. क्या सर अभी अगले साल के लिए भी ये मोमेंटम जो हमने देखा बढ़ा था, वो सर्ज आया था, वो कंटिन्यू होगा 23 में भी? देखिए इनहेरेंट डिमांड जो हाउसिंग की है इंडिया में वो तो हमेशा ही रहेगी क्योंकि हमारे हमारे यहाँ एज आई सेड अर्लियर पेनिट्रेशन लेवल्स बहुत ही कम है. मॉर्गेज टू जीडीपी इंडिया में आई टोल्ड यू अर्लियर खाली 11% है. यू कंपेयर दैट टू चाइना, चाइना इज 25% के करीब. You look at it in advanced countries, they're all 50%, 60%, 70% and higher. तो इंडिया में इतनी कम पेनिट्रेशन है तो ग्रोथ तो बढ़ता ही रहेगा. Now the growth is coming from all over the country. The growth is coming as much from tier 1 cities as it is coming from tier 2 and tier 3 cities. जो 2017 to 2020 जो 3-4 साल का जो पीरियड था, वो टाइम the growth was primarily coming from tier 2 tier 3 towns. पर अभी 20 के बाद after COVID we are seeing the growth is coming from on a pan India basis. तो वो तो मेरे हिसाब से सस्टेन रहेगा. अब एक क्वार्टर में थोड़ा कम होगा, एक क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा होगा, बट जनरली स्पीकिंग ओवर अ 1 year 2 year टाइम फ्रेम द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी विल ऑलवेज रिमेन स्ट्रांग. ओके. कोविड के लिए थोड़ा वरी तो है. इंडिया में इतना नहीं है. ग्लोबली देयर इज फियर, देयर इज वरी, particularly in the Southeast Asian countries. बट मुझे जिस तरह से हम लोग ने जो कोविड सिचुएशन हैंडल की थी इंडिया, इट वाज एग्जेम्पलरी. Vaccination काफी, vaccination is at a very advanced level. Most people have got double vaccinated. तो जो risk जो इंडिया में है वो is far lesser than it would be in other countries. इंडिया में रिस्क डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कम है कंपेयर टू अदर पार्ट्स. सर बट करेंसी एक बहुत बड़ा एलिमेंट हमने देखा इस साल 22 में. बहुत स्ट्रांगली डेप्रिशिएट हुआ रुपी, ऑलमोस्ट 10%. इनफैक्ट ये ग्लोबल और भी करेंसीज की अगर हम बात करें विज़ावी अ डॉलर, क्या लग रहा है 23 में सर? विल वी सी फर्दर डेप्रिसिएशन? क्या आपको लगता है आरबीआई विल हैव टू स्टेप इन जिससे और ना गिरे? क्या व्यूज़ है रुपी को लेकर, करेंसी को लेकर? No, I don't think RBI can do very much now at this stage क्योंकि जो काफी currency we spent quite a bit of our forex reserves in terms of giving some stability to the rupee. पर आपको खाली इंडिया को नहीं, you should not look at only India in isolation. You should look at the US with the rest of the world. हर country की currency depreciate हुई. I don't have the latest numbers, but if you see euro, you see the UK pound, you see most other currencies, their depreciation has been much more than the 10% that we have seen in India. Correct, sir. और जैसे मैंने आपको बताया कि जो the reason for the depreciation of the rupee is more to do with the US rather than to do with us. क्योंकि जो US के अंदर and to do with oil. क्योंकि जब when the Russia-Ukraine conflict started, oil prices went up. जो oil prices बढ़ गए तो वहाँ import costs went higher, means it had an impact on our current account deficit, on our foreign exchange reserves, वगैरह वगैरह. But I think the increase in oil prices, according to most analysts, is now broadly in that $80 to $90 range, $80 to $95 range. तो मुझे नहीं लगता है कि अभी rupee depreciation का there is no chance of a rupee depreciation. I think we will see a much more stable rupee in 2023 than we had saw earlier.
ओके, तो काफ़ी स्टेबल होगी यहाँ से करेंसी आप कह रहे हैं, और डेप्रिसिएशन होने की उम्मीद यहाँ कम है। दैट्स द आउटलुक फॉर 23 जहाँ तक करेंसी डेप्रिसिएशन या रुपये की बात है। ऑल राइट सर, एक सवाल ऑफ कोर्स हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। हमने 2023, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ा ईयर होगा फॉर मेजर कंसोलिडेशन इन द बैंकिंग स्पेस, क्योंकि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर भी इज़ ऑन इट्स कंप्लीशन। पहले तो सर, कब तक, क्या टाइमलाइंस है, कब तक आपको लगता है ये कंप्लीट हो जाएगा मर्जर, और क्या हम और कंसोलिडेशन देखेंगे इंडस्ट्री में? देखिए, पहले तो लेट मी जस्ट फिनिश द HDFC बैंक इशू एंड देन विल टॉक अबाउट ब्रॉडर इश्यूज। तो जो HDFC बैंक की जो मर्जर है वो इट इज ऑन टाइम द वे वी वर एक्सपेक्टिंग इट। द शेयर होल्डर अप्रूवल हैपेंड लास्ट मंथ, नवंबर में शेयर होल्डर अप्रूव भी आ गई है। So now that is only a question of the whole NCLT process getting over and then the procedure prescribed by some of the regulators being complied. So in our view, the way things are looking now, June, which is what our best estimate was earlier, is probably the time when you would see the merger getting culminated. 1 month earlier, 1 month later is possible, or around June is when we would expect it. Now, would it result in a much larger number of M&A transactions in the country? I don't think that is necessary. HDFC Bank में एक particular relationship था. HDFC owned 23% of the 21% of the bank. Bank housing was not doing housing loans directly. The housing loan product was not given that seamlessly. क्योंकि bank थोड़ा, bank used to source about 1/4 of our business. Bank used to bring the application to us. We would do the appraisal and all of that. We would disperse the money. Then the bank would buy a part of that loan. So there was some degree of, it wasn't as seamless a process as one would have liked. So there were reasons why the merger happened. But that does not necessarily mean that in the NBFC space there is need for a very large number of NBFC mergers or mergers of NBFCs into banks. मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है. Specific cases, specific reasons might be there by some groups or some NBFCs might like to look at a banking structure in the course of time. But NBFCs play a very important role according to me. They operate in a segment of the market जहाँ banks नहीं operate. ओके, फेयर इनफ। तो ये है, अगर हम देख रहे हैं सेक्टर के बारे में किस तरीके का आउटलुक है इस कमिंग ईयर, और ऑलरेडी अच्छा रन अप 22 में देखा, और वो मोमेंटम कंटिन्यू होने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स बिग मर्जर जून तक आप कह रहे हैं, उससे पहले तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये उम्मीद लगाई जा सकती है। ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए।